মিটাৰ লাগিছে নেকি স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি আপোনাৰ ঘৰত লগোৱা হৈছে তেনেহলে সাৱধান কাৰণ এতিয়া ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইত্যাদিৰ একাউণ্ট হেক কৰাই নহয় এতিয়া হেকাৰে হেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ হেক কৰি আপোনাৰ এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সকলোবোৰ তথ্য যেতিয়া পাব তেতিয়া আপোনাৰ কি বিপদ হ'ব পাৰে আমি লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ বাবে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যুগ আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি শক্তি বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাই দিছে তেনেহলে এটা ভয়ংকৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছো যেটো তথ্য আপুনি জনাটো প্ৰয়োজন স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি আপোনাৰ ঘৰত লাগিছে তেনেহলে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো সময়তে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ হেক কৰিব পাৰে দুৰ্বৃত্তই আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো হেক কৰি কি কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিছো এপিডিচিএলৰ মোবাইল এপ্লিকেশন মাই বিজুলী আৰু স্মাৰ্ট বিজুলীৰে হেক কৰিব পাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ মাই বিজুলী আৰু স্মাৰ্ট বিজুলী বুলি শেহতীয়াকৈ যিকেইটা এপ্লিকেশন দিয়া হৈছে সেইকেইটা এপ্লিকেশন যথেষ্ট ভয়ংকৰ কাৰণ সেই এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সকলো ডিটেইলছ লাভ কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ টকা হৰলুকি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজুলীৰ বিল বঢ়াই দিব পাৰে ধন মাইছনত দেখুৱাই কাটি দিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ প্ৰমাণ কৰি বিদ্যুৎ ভৱনৰ CMDক দেখুৱালে বগাইগাঁৱৰ দুই যুৱকে শেহতীয়াকৈ বগাইগাঁৱৰ দুগৰাকী যুৱকে এই সমগ্ৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে যুৱক দুগৰাকীয়ে উদ্ঘাটন কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো যে দুৰ্বৃত্তই কি কৰি আছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰত শক্তি বিভাগে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাই দিছে তেনেহলে ভালদৰে চাওক স্মাৰ্ট মিটাৰটো আপোনাৰ ঘৰৰ কোনখিনিত আছে দুৰ্বৃত্তই যদি আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো চাব পাৰিছে চুব পাৰিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আইডি যদি জানে তেনেহলে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰত অধিক বিল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰৰ বিজুলী সংযোগ তেওঁলোকে কৰ্তন কৰি দিব পাৰে এনে ধৰণৰ এক চক্ৰান্ত এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইজি মানিৰ সন্ধানত থকা বহু যুৱক এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে এনে ধৰণৰ হেকিং বৃত্তিৰ সৈতে হেকিং বৃত্তি কেৱল এতিয়া যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে তেনেকুৱা নহয় হেকিং বৃত্তি ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখনো হেক কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ হেকাৰ ওলাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেনেহলে ভালদৰে চাব আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো ভালদৰে সকলোৱে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰে তেনেধৰণে আপুনি ঢাকি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটোৰ আইডি যদি গম পায় তেনেহলে কেইটামান এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটোত অধিক বিল তেওঁলোকে ভৰাই দিবও পাৰে আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰ্তন কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হৈ যাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ হেক কৰি আপোনাৰ জমা ধন হৰকাব পাৰে দুৰ্বৃত্তই ধন মাইছনত দেখুৱাই কাটি দিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু প্ৰমাণ কৰি দিছে বিজুলী ভৱনৰ CMDক দেখুৱাইছে বগাইগাঁৱৰ দুগৰাকী যুৱকে দুজন যুৱকে এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ আনিছে আৰু তাৰ পাছতে আপোনাক আমি সচেতন কৰিছো টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা সচেতনমূলক খবৰ সচেতনতা অৱলম্বন কৰক আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো ক'ত আছে চাওক যিকোনো মানুহে যদি আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো চাব নোৱাৰে তেনেকৈ ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আইডি যদি গম পায় যিকোনো মুহূৰ্তত কেইটামান এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰা তেওঁলোকে সংযোগ কৰি আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন হৰকাব পাৰে লগতে আপোনাৰ বিদ্যুৎৰ বিল কেতিয়াবা বঢ়াই দিব পাৰে অথবা আপোনাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিব পাৰে সাৱধান সহজেই এপিডিচিএলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ হেক কৰিব পাৰি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আপুনি एपीडीसीएल का जो एप्लीकेशन है तो मेरा घर पे अभी रिसेंटली स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हुए तो इंस्टॉल होने के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि रिचार्ज करना होता है प्रीपेड से तो मैं एपीडीसीएल के ऑफिस में गया तो मुझे वहाँ से पता चला 2 एप्लीकेशंस उन्होंने लॉन्च किया है माई बिजली एंड स्मार्ट बिजली बोल के फिर वो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मुझे पता चला कि एपीडीसीएल की तरफ से कुछ एड्स देता है उनके ऐप में कि स्कैम्स हो रहा है मनी एक्सटॉर्ट करने का कोशिश करता है एपीडीसीएल के कस्टमर से तो मुझे वहाँ से पता चला कि एपीडीसीएल का कस्टमर का डेटा लीक होता है कहीं से तो मैंने सोचा मेरा भी इसमें अकाउंट है मैं भी कंज्यूमर हूँ तो मैं सोचा कि मेरा डेटा किसी के गलत हाथ पे तो नहीं जा रहा है तो इस रिगार्डिंग इस बात को लेकर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया मैंने और आदित्य सिंह ने दोनों ने रिसर्च स्टार्ट किया इस बात को लेकर फिर वंस ये रिसर्च स्टार्ट हुआ धीरे धीरे हम लोगों ने अपना रिसर्च एक्सटेंड किया और थोड़ा अंदर गए तो हम लोगों को पता चला कि स्मार्ट मीटर्स भी हैक हो सकते हैं एंड हैक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आप किसी का भी घर का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर सकते हो मतलब पूरा असम स्टेट को आप ऑफलाइन लेके जा सकते हो जब तक चाहो एंड सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रहा है बट अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता है तो आपका पानी चालू नहीं होगा पानी का मोटर्स चालू नहीं कर सकते हो आप घर पे पानी आप पंपिंग नहीं कर सकते हो
ठीक है। उसके बाद आपका पानी नहीं आएगा तो और भी बहुत अलग अलग चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका बहुत सारा इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो दिखने में बहुत सिंपल चीज़ है, बट इससे बहुत बहुत अलग अलग इश्यू हो सकता है। बेसिकली हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी लेवल का इशू है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर से कंट्री में घर के अंदर से अगर कर पा रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पर असम में बैठ के अगर ये चीज़ कर पा रहा हूँ, तो बाहर से कंट्री में भी कर सकता है, बाहर की कंट्री से। तो फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि बाहर से कंट्री से हैक करता ही है, तो हैक करके पूरा असम स्टेट को ऑफलाइन लेके जाता है, एंड ऑफलाइन लेने के बाद 5-6 दिन 10 दिन तक तो लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा हैक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैक है ये। तो अगर ऑफलाइन रहता है 5-7 दिन तक पूरा असम, फिर उसके बाद कोई भी मोबाइल इन्वर्टर तब तक नहीं चलेगा, इतना बैकअप नहीं देता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ होता है बॉर्डर्स पे तो कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी लेवल का इशू है। तो और भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रिसिटी, किसी को पता भी नहीं चलता, फ्रॉड भी हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फॉर्म नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन को एंड कोई दूसरा कोई हैक करके रखता है इसको, तो वो क्या कर सकता था, 10,000 का रिचार्ज कर देता किसी को फ्री का, इसको तो कुछ नहीं जा रहा है, फ्री का रिचार्ज कर दिया एंड बोला कि 5,000 रुपीज़ दे दो, 50% ऑफ में रिचार्ज करके दे रहा हूँ। तो ऐसे भी फ्रॉड हो सकता था। तो हम लोगों ने जिस दिन मैंने ये निकाला ये चीज़, उसके 2 दिन में मैंने APDCL को रिपोर्ट कर दिया, एंड APDCL का पूरा टीम, जो टेक टीम था, वो सेम डे में बिजली भवन से बोंगाईगांव आया था। आया था। फिर हम लोगों ने बात किया, शेयर किया जो जो चीज़ हो रहा है इस स्मार्ट मीटर्स के साथ, सब हमने शेयर किया उनके साथ मिलके, एंड उन्होंने पर्टिकुलर एक चीज़ फिक्स कर लिया है अभी, एंड बाकी जो अलग अलग चीज़ें वो फिक्स करना भी बाकी है। तो अभी हम लोग के साथ APDCL के साथ डील चल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे करके ये चीज़ करना है।